myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about MCQ questions on DC circuit. This is part 1. I have also developed part 2, part 3. Okay, so this will be helpful for your GATE examinations and some competitive examinations. Okay, and this will give how to solve these problems, right? So question number 1, a circuit with N nodes and B branches are required at least, we know number of loops पूछ रहा, so number of loops equal to क्या होता है, B minus N plus 1, B minus N plus 1, B minus N plus 1. Yes, D answer is correct, right? An ideal voltage source, the internal resistance is what? We know in case of voltage source, internal resistance connected in series and it should be minimum. अगर ज़्यादा voltage है, ज़्यादा resistance है तो क्या होगा? Drop will be more. So internal resistance should be minimum and ideally it is 0. So B answer is correct, right? Okay. Question number 3. In a parallel circuit, the equivalent resistance is all of the individual resistance. In case of parallel circuit, the equivalent resistance, as you connect the resistance, क्या होगा parallel में, if you connect the resistance in parallel, equivalent resistance will decrease. So equivalent resistance will be the smallest, okay, and it should be less than the minimum value कभी भी, okay. 4. Voltage drop across 4 ohm resistance here in this resistance. So we know अगर आप solve करते हैं तो all 1, 8, 4 and 2 all are in series. So what is the R equivalent? R equivalent 8 plus 4 plus 2 plus 1 is 15 ohm, right? So what is the value of I? I equal to V upon R. V कितना है? 225 upon, what is the value of R? I equal to V by R. V is 225 upon 15, that is 15 ampere, right? Now what is the voltage across here? Across, that is V. So V equal to क्या होगा? V across 4 ohm equal to what? I into R. I is same 15 and what is the value of R? 4. So it is 60 volt. So that is the answer B, right? Question number 5. The load resistance, the load increases means load resistance, okay, increase, decrease, whatever. Load increases means what? As the load increase means current increase. ये तो हमको clear cut है. Load बढ़ता है तो current बढ़ता है. What is the current? I equal to what? V upon R. ये कब increase होगा? जब resistance will decrease, because V तो constant रहता है. This is constant always. Supply voltage is constant, right? So as the resistance will decrease, so current will increase, right? So as we say load is increases means current is increase हो रहा. Current बढ़ रहा है कब? जब resistance decrease होगा. So it is decreases. Okay. 6. A series circuit consists of 4 kilo ohm, 5 kilo ohm, 6 kilo ohm, 7 kilo ohm resistors. Which resistor has the most voltage drops? अभी अगर सीरीज में है तो क्या सेम है? करंट इज सेम. करंट सेम है तो किसका क्रॉस सबसे ज्यादा ड्रॉप होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी. 7 किलो ओम. डी आंसर इज करेक्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If 10 resistances each of 1 ohm are connected in parallel, the equivalent resistance. If 2 resistance in parallel, it is 1/2. 3 resistance in parallel, 1/3. 4th resistance in parallel, 1/4, like that. ऐसे 10 resistance is parallel, so 1/10. 1 upon 10 मतलब 0.1 ohm. Okay, 7 का A. If 100 watt is applied across 200 watt 200 volt lamp, the power consumed will be, please याद रखो,
जब भी आप लैंप परचेज करने जाएंगे यू हैव टू से द वाटेज, यू हैव टू से द वोल्टेज। सो इससे क्या मिल जाता है, इससे मिल जाता है आपको आर। व्हाट इज द पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कांस्टेंट आर इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, राइट। वी स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200, 200 स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है, पी कितना है 200 वाट। इसका मतलब यू विल गेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट लैंप इज 200 ओम। 200 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है 200 ओम, 200 वोल्ट है। तो अगर आप वोल्टेज कम कर दें, हाफ कर दें, 200 के बदले में 100 कर दें, तो पावर क्या होगा, P इक्वल टू कंजम्पशन क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर कितना है 100, अप्लाई कर रहे हैं 100, वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है 200। सो यू विल गेट 50 वाट सी। सो इसका मतलब है अगर आप वोल्टेज हाफ करेंगे तो पावर विल नॉट बी हाफ, पावर विल बी 1/4। क्लियर। सो पावर चेंजेस विद द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, राइट। Okay. 9. The total current drawn by the circuit shown in figure from the supply is total current drawn. Okay. Now see here, this is 9 ohm, this 2, 6, 9, 3, this 2, 6 and 3 ohm all are in parallel. You can say they are in parallel. So पहले एक काम करने, तीनों का ना निकाल के इन दोनों का निकालते, इन दोनों का 6 and 3 पैरेलल क्या आएगा 6 into 3 18 R1 into R2 upon R1 plus R2, 6 into 3 18 upon 6 plus 3 9, 18 upon 9 2 ohm. Now this 2 ohm and this 2 ohm both are in parallel, so 1 ohm. इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1 ohm. 9 and 1 both are in series, so what is the value of I? I equal to कितना आएगा, I equal to V by R। कितना है V 150, R कितना है 10, 9 plus 1, so we are getting 15 ampere, 15 ampere। Okay, D answer is correct, right। Question number 10, the voltage across 2 ohm resistance as shown in figure। same problem, same problem। I कितना आ गया इधर, what is I? I कितना है 15 ampere, right। जब I यहां से 15 एम्पियर आएगा तो यहां ड्रॉप हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू व्हाट 15 इंटू 9 135 वोल्ट। टोटल अप्लाइड वोल्टेज 150 है और 135 यहां ड्रॉप होगा, तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस हियर 15 बचेगा ना 15 वोल्ट। So voltage across 2 ohm, voltage across 6 ohm, voltage across 3 ohm will be 15 volt. Answer is 15. A answer is correct, right? Okay, next question, question number 11. 11. A parallel circuit consists of 4 kilo ohm, 5 kilo ohm, 6 kilo ohm and 7 kilo ohm resistors, right? Parallel, all are in parallel. Which resistance has the most current through? In case of parallel circuit, sorry, in case of parallel circuit, V will be same, voltage are same. What is the I equal to क्या होता है V by R, which resistor has the most current, सबसे ज्यादा करंट कहाँ होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट। किसका रेजिस्टेंस कम है, ये 4 किलो ओम, बिकॉज हियर V तो कांस्टेंट है, सब पैरेलल में वोल्टेज विल बी सेम। ओके, अगर रेजिस्टेंस कम है तो सबसे ज्यादा करंट किसका होगा 4 किलो ओम का। ए आंसर इज करेक्ट, राइट। 12, if 10 resistance each of 5 ohm are connected in series, 10 रेजिस्टेंस सबका 5 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा 5 plus 5 plus 5 plus 5 like that, so 10 रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस each of 5 ohm, so 50 ohm हो जाएगा, 50 ohm। सी आंसर इज करेक्ट, क्लियर।
13. An electric heater draws 3.5 ampere from 110 volt supply. The resistance of the heating element V equal to क्या होता है? V equal to Ohm's law, V equal to IR. So what is the value of R? V by I. V कितना है? 110. R कितना? I कितना है? 3.5. Okay, so 3, if you divide 110 upon 3.5, just wait, 110 divided by 3.5, I am getting 31.42, 31.4, that is the answer, D. Okay, 14. 4 resistance of R1, R2, R3, R4 connected in series. Be careful, they are in series. R1, R2, R3, R4 are in series across 220 volt supply. The resistances are such that R1 is greater than R2, greater than, okay, R1 सबसे बड़ा है और R4 सबसे छोटा है. The least power consumption we know. P equal to what? P equal to I square R होता है. ओके, आई क्या है? सेम. क्यों? दे आर इन सीरीज. अभी सबसे लीस्ट पावर कंजम्पशन किसका होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा. इफ दिस इज लेस, पी इज लेस. क्लियर? बिकॉज आई तो सेम आने वाला है. रेजिस्टेंस किसका कम है? सबसे कम R4 है, मिनिमम है. सो दैट इज आंसर डी. ओके, okay. Question number 15. To unequal resistance. अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में अनइक्वल, so voltage drops across both are same. Yes, parallel में voltages are same. That is the correct answer. Currents in both are same. No, currents may be different. Will be different. Heat losses will be different. Voltage drops are according to their resistive values. No, in case of parallel, voltages will be same. Okay, so answer 15 का ये है. 16. Two identical resistors, identical among equal resistors are first connected in parallel, then in series. The ratio of resultant resistance of the first combination to the second. अगर suppose करो दो resistance parallel में हैं, for example 2 ohm and 2 ohm in parallel, what is the equivalent resistance? Half, 1 ohm. और बाद में ये दोनों सीरीज में है 2 2, so क्या आएगा? 4. what is the ratio of resultant resistance of the first combination to the second? 1/4 मतलब 0.25. yes, B answer is correct. Right? Okay, 15, 16, right? 17. When n number of resistance of each value are connected in parallel, sorry, n number of resistances of each value are connected in parallel, then the resultant resistance is X. Okay, X आएगा. Then these n resistances are connected in series. The total resistance is, okay. So question number 17. Just see here, 17. First of all, they are in parallel. If they are in parallel, n resistance, so क्या आएगा आंसर? R रेजिस्टेंस थे और दे आर n नंबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R बाई n आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है वो? इट इज x, राइट ना? R ओम के रेजिस्टेंस n नंबर है पैरेलल में, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहेगा? R बाई n, एंड ही इज सेइंग इट इज x, राइट? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? हेंस R इक्वल टू व्हाट? nx, राइट? nx. नाउ बाद में क्या बोल रहा है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इफ दे आर इन सीरीज, क्लियर, दिस रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? n टाइम्स इनटू R.
R resistance अगर n सीरीज में है, n number of resistance are connected, so total resistance will be NR. ओके, सो यहाँ n है और यहाँ nx है. R की वैल्यू कितनी है? nx. R की वैल्यू कितनी है? nx. सो क्या आएगा? n स्क्वायर इंटू x. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर इंटू x. है क्या आंसर? यस, n स्क्वायर इंटू x. B. Clear? Two resistance R1 and R2 gives resistance of 4 ohm and 0.7 ohm respectively when they are connected in series and parallel respectively. So series में है तो R1 plus R2 equal to what? 4. और parallel में है तो R1 parallel to R2 कितना है? 0.75 respectively. What will be the value? दोनों का सम कितना चाहिए? 4. ये तो रॉन्ग है. 8 और 4 12 हो जाएगा. ये 3 into 12 हो जाएगा. 9 6 15 हो जाएगा. No, this is the maybe. This may be correct. 3 plus 1 4 बराबर है और पैरेलल में 3 into 1 3 upon 3 plus 1 4. 3 upon 4 is 0.75. ये भी करेक्ट है. So B आंसर is correct. Okay? कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट आंसर देख के आ जाते हैं. Okay. 18. Okay. 19. Two equal resistors are connected in series across a voltage supply of two equal resistance. Clear? R connected in series across voltage source of V dissipate power P. Two equal resistance are in series. So two equal resistance means what? Two equal. Sorry. Two equal resistance. So R. So P equal to क्या होता है? V square upon R plus they are in series, so V square upon R. Two equal resistors are connected in series. Sorry, this is not correct. I am going to make it. So two equal resistors, they are in series. So क्या आएगा? R connected across supply of V volts, right? So 2R हो जाएगा ना. टोटल R इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R. ओके, वोल्टेज अक्रॉस है तो P इक्वल टू क्या आएगा? P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2R. दैट इज द पावर कंजम्पशन. P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2R आ जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस है 2R एंड वोल्टेज V, तो V स्क्वायर अपॉन 2R दैट इज अ P पावर आ गया. नाउ सेम what would be the power dissipated in the same resistance when they are connected in parallel? अभी ये अगर parallel में है across the same supply, okay, so R कितना हो जाएगा? resistance कितना हो जाएगा? total resistance कितना हो जाएगा? R by 2, because we know if the two equal resistance in parallel it is half, right? So power कितना हो जाएगा? power equal to what? power equal to V square upon R by 2. R by 2 equal to what? V square upon R into 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, into 2. Okay. And V square upon 2R. अच्छा, ये कितना होगा? So this is V square. P ये है तो ये कितना हो रहा है? 2V square upon R. स्क्वायर अपॉन, so यहाँ से फ्रॉम हियर V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू क्या आएगा? 2P ना. V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 2P. तो यहाँ वैल्यू पुट करते तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? पावर कंजम्पशन हियर, पावर कंजम्पशन इक्वल टू 2 एंड V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू क्या होता है? इंटू 2P. सो 4P आ जाएगा. यस, इट इज 4P.
Okay, 4p. Next, three ohm resistance are connected to form a triangle. What is the resistance between any two of the corners? Suppose this is the 3 ohm, this is the 3 ohm, this is the 3 ohm, right? 3, 3, 3. You connect 3 ohm resistance connected to form a triangle, right? What is the equivalent resistance? पहले ये बताओ, these two are in what? Series. Whatever the current is coming, same current यहाँ जाने वाला तो 6 ohm हो जाएगा ये 6 ohm कहाँ connect between this point and this point? Similarly, this 3 ohm is also connected to this point and this point. So 6 and 3 parallel equal to 6 into 3 18 upon 6 plus 3 9 equal to 2 ohm. Yes, D answer is correct. Okay. Twenty-one. 21. A circuit contains two unequal resistance in parallel. Resistance in parallel, right? So voltage drop across both will be same. That is answer A, right? ये repeat हो गया है. Two resistance R1 and R2 gives resistance of R1 and R2 gives the resistance of 20 ohm and 3.75 ohm respectively when they are connected in series and parallel. Series में है तो 20 है और parallel में है तो 3.75, right? So what would be the value of the resistance? You can get the answer from here. 8 plus 12 series में 20, 14 plus 6 20, 15 plus 5 20, 10 plus 10 20. So all are correct. But parallel में क्या है 3.75? 10 and 10 parallel. Equal value half. No. 14 and 6. 14 into 6 upon 20. देखो आप ये है 15 into 5 75 upon 15 plus 5 20. 75 upon 20 is the 3.75. The C answer is correct. Okay, C is correct. ठीक है? (23) 23. The resistance of thin conductor. Resistance of thin conductor क्या होता है? Is same lower higher as compared to the thick conductor. What is the resistance? R equal to what? Rho L upon area. Thin मतलब area is less. Thin मतलब area is less. What is the resistance? More. So resistance of thin conductor, resistance is higher compared to the thick conductor, right? Resistance ज्यादा होगा thin का ना, resistance ज्यादा होगा तो higher resistance रहेगा इसका, right? Question number 24. Voltage across each resistor connected in parallel circuit is same. Voltage across each resistors connected in parallel. Parallel में अगर resistance है तो voltage will be same. Clear? ये answer is correct. अगर current पूछा होता तो current series में same होता है, right? Okay. Okay. Question number 25. The effective resistance of the parallel combination of resistances is always greater or smaller than the smallest individual resistance in parallel combination. Smallest individual resistance greater than? No, smaller than. Suppose करो ना, so जो अगर पैरेलल में होते हैं रेजिस्टेंस तो उसको जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती कभी भी लोअर रेजिस्टेंस से कम रहती है. जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहता है जिसकी वैल्यू सबसे कम रहती है उससे भी कम आती है. करके देख लो 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1.2 होगा, 2 से कम हो गया, राइट? सो दैट इज आंसर.
Okay, this is the answer sheet. Okay, please check your answers. Okay, thank you very much for listening me carefully. Thank you.